Sir, Yes. can you start this? Which one is that? This? Yeah, Up. That trendy level. but थोड़ा लगने तो बाद में बंद कर because it is suffocating. Okay. So this is energy sources. Let's see. So quickly, so I think we discussed what should be the characteristics of good source of energy. We have completed that, right? We have done that. So characteristics we have done. This is of a good source of that also we have done. Okay, so what are the types of energy? What's the difference? Types of energy we have two, right? So what are they? Non-renewable and renewable. Non-renewable is also called as conventional, right? Renewable is also called as non-conventional. So can you quickly tell me what are non-renewable? These are fossil fuels, right? These are fossil fuels, which includes coal, petroleum, and natural gas. So with this, I think I have already given the breakup, right? And what about non-conventional? Solar, wind, hydro. These are the main. Solar, wind, hydro. Then we have tidal. Then we have ocean, right? Yes. In ocean we have two, right? What are they? Ocean thermal and ocean wave energy, right? Yes. There are two. Did I cover what is ocean thermal? Did I cover ocean wave? Okay, I just listed, not explained, right? Okay, fine. So we do it. So solar, wind, hydro, tidal, ocean. What else? Geothermal. Then we have biomass. And so out of this, we are today producing energy using solar, wind, hydro, not so much by tidal and oceanic in our country. Even geothermal, this is very insignificant. By biomass and so these are the 4 or 5 renewable sources of energy which we are harnessing for our energy needs. Okay, so let's look at how do we do it, right? So basically, what is the energy that we need? Electricity, right? So we produce electricity from all this. Okay, so what do we do? Basically, this has to be burned, right? So basically, how electricity is produced? So basically, to produce electricity, we need to rotate armature coil of electric generator. So basically, we use an electrical device called electric generator. So what is that electric generator? So it has basically inside generator you have a north pole, you have a magnet, north and south. Then you have a coil inside. Right? Then you have, and this is basically given to
This is how the electricity is produced between these two. Okay, yes. Right? So this armature has to be rotated. This is the axis of the armature. This armature, you will learn about it in 10th standard. Okay. So this is basically, what is this device? It is called generator. Or at a smaller scale, we call it dynamo. Okay. So this generator has a turbine. Right? So it has a fan. Okay. So this is basically turbine. So this turbine has to be rotated continuously. Once this turbine rotates, say either in this direction, right, or in the other direction, then the electricity will be produced between these two points. Then through transmission cable, it will be distributed wherever it is needed for domestic purpose, industrial purpose. Okay, so you might have seen all the wires, right? Huge poles which are having 3 bars on this side, 3 bars on this. So how to rotate this turbine? So there are steam turbine, right? This turbine can be rotated through steam turbine or through flowing water, so hydro, right? Flowing water. So when a flowing water is left on the pins of the blades of turbine, then it will start rotating and then the electricity is continuously produced. I mean, we cannot imagine a man to basically rotate the, it will be too much, right? So that's why flowing water through dam or steam, these are the two main things, right? Now, how do you produce steam? So we burn coal. Okay, so that is when we produce thermal electricity. That is called thermal power plant. And we have now our energy needs, every house requires energy. So much coal is burned. And therefore, a lot of pollution is generated. So all the major source of pollution today is thermal power plants by burning coal. So when we use it, there is no pollution. But when we produce electricity by burning coal, there is a lot of impact on our environment. Right? So, but flowing water has no impact as such. But then there are other problems. Wherever the dam is built, all the ecology ahead of that is destroyed. Right? Also, when the dam is built, the water, all the what do you call neighborhood, it gets submerged. So a lot of people will have to be displaced, okay, uprooted and resettled at some other location. So there are challenges in every kind of energy production. Okay. So is this understood? How electricity is produced? We need a generator which has to be rotated. How it is rotated? It is through these fuels. Right? Now, in case of solar, it is different. Solar does not require generator. Okay? What do we do is, so let us see. So in case of solar, what do? We use something called as solar cell. Okay. So what is a solar cell? Solar cell is a semiconductor material. You are familiar about metal, right? And insulator. There is a substance whose properties between metal and insulator. That is why it is called semiconductor. So example of semiconductor is like silicon, germanium, right? Then there are certain alloys, gallium arsenide, etc. Okay. So many things behave as semiconductors. So solar cells are made out of these combinations, right? So when sunlight falls on it, solar means sunlight, right? Solar radiation, sunlight falls on it. Then above and below it, okay, the potential difference is created. Plus and minus, like in cell. So this is the potential difference, and this is what we need. So roughly around sometimes, how much is the potential difference? 0.5. Small potential difference is created. 0.4 to 3.5. So it's very small, but right. So it is 0.4 to 0.5.
0.4 to 0.5 volt. Do you know how much potential difference is needed to power a torch bulb? At least 1.5 volt. Okay. So we will need to then add 3 solar cells, right? So one cell produces very small electricity. So when we join these cells together, right? Let us say this is joined with another cell. Another is joined with another cell, right? So now what is the potential difference between here to here? So this is 0.5 plus 0.5 plus 0.5. So this is now 1 point. Okay, likewise, whatever potential difference is needed. So that is why what you see is so many solar cells placed together and you get a solar panel like this. Can you see? Yeah. So you have so many cells joined in series with each other to then produce or get a maximum potential. So this is the first terminal and this is the last terminal. So now the potential difference between these two is the sum of all this. Got it? So this is how all the devices can be powered. So understood how solar cell produces electricity? It directly converts sunlight into electrical energy. Okay. Now what about wind? So we have to rotate this turbine. So it can be rotated through windows. Right? So minimum 10 to 10 or 15 kilometers per hour. This should be the speed of the wind to be able to rotate this turbine and produce some electricity, right? So is that correct? Just see how much is the wind velocity. 15 kilometers per hour, not 10, 15 minimum velocity. So therefore, you can't have, do we have wind flowing at that speed every time? Right? So not everywhere in the country. So there are certain geographies, like if you see India's topography, is it looking like India or Africa? Imagine it is India. Okay. So we have a lot of wind farms constructed in Gujarat in this area. We have a lot of wind this coast. So we have wind farms at Tamil Nadu, like Coimbatore and that area. And we also have a lot of wind farms in Gujarat. Okay, so you need wind availability. Now the problem with it is, so you use something called as windmill. So have you seen on the highway side, if you have driven from here to, let's say, Shirdi or somewhere, there also we have some sporadic windmills. Now, one windmill can produce about 1 or 2 megawatts. Okay, 2 megawatts. And 1 megawatt is required to power about 500 families. Right? So in 1 megawatt, how many villages can you cover? Can you cover 1 village? 1 village can you cover? So something like that. So you can calculate how much windmills you need to get. Okay. So this is how you can produce electricity using windmill. So windmill mein kya hoga? There is no turbine. The windmill itself, that big hand blades, they are all what? You know how many meters that length is? 90 meters. Can you imagine one blade? This is 90 meters. So you will see the giant wheel rotating. So from far away it looks small, but as you go here, it's humongous, very big. If you get an opportunity, just try to go near that. It's very big. Okay. So likewise, hydro. So again you rotate. So the dam is constructed. So all the water energy is converted into potential energy. So it has a lot of potential energy. Now when the water gates are open, it is then released. So that moving water has a lot of kinetic energy. So that kinetic energy is used to rotate the turbine. Therefore the electricity is produced. Okay. So that is your hydro energy. Let's understand what is tidal energy. Now tides, are you familiar what are tides? High tide and low tide. What is tide?
वो Tide पानी ऊपर आता है. पानी ऊपर आता है। तो जब भी पानी ऊपर आता है ना, तो हम क्या करेंगे, समझो ये हमारा सी साइड है, ठीक है, इधर पानी ऊपर आ रहा है, समझो हमने इधर एक डैम बनाया, तो वो पूरा पानी डैम में भरेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, 24 घंटे में 2 बार हाई टाइड और लो टाइड होता है, ठीक है, 6-6 घंटे का साइकिल है। तो वो जब भी पानी भर गया और ये रिसीव हो गया बाद में, फिर हम वो पानी छोड़ के इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, ठीक है। बाद में फिर खाली हो गया और फिर हाई टाइड में भर लिया। लेकिन ऐसा साइट कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा टीडियस, Last. बुरा लगेगा। आपने नहीं रहता. तो फिर क्या बोल रही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसका, मैं रिपीट ये वाला तो बोला था. टाइड बोला था ना। हाँ. तो टाइडल एनर्जी इसलिए हम ज्यादा यूज नहीं आपने करते बोला इंडिया था में। कि इंडिया में ज्यादा ये कर बस हाँ, साइड से इतना ही बोला था क्या? ठीक है, ठीक। तो आते वाते बोला था क्या, मतलब क्लास एंड हो रही थी, ठीक है। तो ये टाइड समझ लो कि इट इज नॉट वेरी कन्वीनियंट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट अ लार्ज स्केल यूजिंग टाइडल, क्योंकि हमारे इंडिया में वैसी साइट्स ही नहीं जहाँ पर इतने डैम्स बना सके, क्योंकि तो सी साइड में वो सॉफ्ट होता है, तो हाँ वो बनाया और वहाँ टिकना तो नेचुरली अवेलेबल है तब तो ठीक है। तो यूएस वगैरह में है वैसा, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं। Then let us understand thermal. What is ocean thermal? देखो क्या होता है, जो सी का टॉप एरिया, टॉप दैट इज डायरेक्टली एक्सपोज टू सन, ठीक है ना। तो ऊपर वाला पानी है वो गर्म होता है, और जब तुम डीप जाओगे सी में, तो डीप वो पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है, बिकॉज वहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती। So there is a difference in temperature between the free surface and deep surface. So as long as the temperature difference is about 20 degrees Celsius or more, that can be used to create electricity. Okay, the temperature difference between the upper and lower, so it is called hot and cold. So difference in the heat, there are technologies available that can be used to produce electricity. Okay, but then that is not very cheap or economical way of producing electricity, because you have to build those setup at sea top level and go below and to manage all that, so that's very risky also. So we are not producing a lot of energy using these techniques. Then there is something called as geothermal. What is geothermal? Right, then wave. What is wave? ये समझ आ गया, ocean thermal, difference in temperature से electricity बनाना। wave में क्या होता है, the wave of the sea, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, my answer, wave कैसे होता है, ऐसा वो होता रहता है, anything which is moving as a kinetic energy. So if I have some device which can trap that kinetic energy, ठीक है, and give me, तो basically तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमको चाहिए क्या, एक डिवाइस चाहिए जो दूसरी एनर्जी को ट्रैप करके हमको जो डिजायर्ड एनर्जी चाहिए वो यूजफुल फॉर्म में हमको एनर्जी ले जाए। तो वेव से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का जो डिवाइस आता है, ठीक है, दैट आल्सो वी आर नॉट यूजिंग बिकॉज इट इज वेरी कम्बरसम प्रोसेस। सो वी आर नॉट यूजिंग टाइडल और ओशियन इलेक्ट्रिसिटी एट अ लार्ज स्केल। लैब में ठीक है, चलो इससे भी बना सकते हैं, अगर कुछ नहीं बचा तो फिर ये भी करें, बट राइट नाउ वी हैव अदर ऑप्शंस। Like in our country, there is no, solar energy is available everywhere. Almost entire India is exposed to sun. Okay? We are producing solar energy in a big way in Ladakh. It has like snow cover, but it also has sunlight. Okay? So there the cables cannot be laid, right? So therefore they are putting up a lot of solar power plants, right? And solar power plant, okay, this is like solar cell. There is something called a solar power plant also. So what is solar power plant? Let me explain this. solar panel वाले No, not panel. We use mirrors, concave mirrors, and when sunlight is, incident on those concave mirror, then it will be concentrated, right? The reflected light will come at the focus of it, right? So what do we do is, at the focus we have kept pipes in which you have water, right? That water is converted into steam. So steam is now generated through solar light. That steam is then directed to
rotate the steam turbine. So large scale, a 50 megawatt plant is available. 50 megawatt or kilowatt, yes. The solar power plant is 50 kilowatt. Gurgaon, Haryana में डेवलप किया है. So it is not even megawatt, it is kilowatt. So small, so many plants. You know how much energy we need for our house? If you are running AC, geyser, etc., at least 5 to 10 kilowatt. एक घर के लिए कितना चाहिए? 5 to 10. तो ऐसा अगर कोई सोसाइटी है तो रन कर सकते. Got it? Okay. तो ठीक है. और क्या बता रहा था? Geothermal. Any questions still here? No. Now geothermal. Geothermal क्या होता है? Geo means earth. Thermal means earth heat. So what happens is deep inside Earth's crust, there are certain spots where the molten lava comes in contact with ground table, water table. So that water is then converted into steam, and that steam is trapped inside rocks, right? So if it is trapped inside hard rock, right? So for that we drill some pipe and take out that steam, and then we guide that steam onto turbine. Okay, so pipe डाल के steam निकाल के we run these turbines. So now we are not burning any fuel or anything. Okay, so those spots are called hot spots, right? But if that thing is not trapped in rock, if the crust is soft, then that will come out as volcanic eruption, or there will be hot water springs. Okay, so all those things are possible. But the steam which is trapped inside rock is at very high pressure. That steam has a lot of energy. Like in pressure cooker, you must have seen, right? So that steam can be used in this way to produce electricity. So understood? How do we use geothermal electricity? We need hot spots for that. But in India we have that only at MP. So therefore we cannot use it for large scale electricity production. But in US and New Zealand, there are so many hot spots, right? Here, biomass. I think we discussed it. Biomass is human, animal, and plant waste, right? So that can be. So there are again devices which can be used to harness energy also. Okay. आपने वो power क्या उसका बोला था? Gobar gas. So that is example of biomass. And also like Punjab में जो खेत में आग लगा देते हैं, है ना? So that Bareilly or Bareilly. So there are certain devices which are made, which can be used to convert all that bio waste into useful electricity. Okay. So that is biomass. So that is also not at a very big scale, but this can be used in rural areas, because to put up these facilities for producing energy using biomass, it requires a lot of space. City में वो करना viable नहीं, because we have scarcity of real estate in cities, but in rural area this can be used. Okay. Then we have nuclear. So nuclear में क्या करते हैं? Now, did I explain about nuclear reaction, fission and fusion? Explain किया ना? So let me explain. रॉकेट ये करते हैं तो जो भी एनर्जी होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी किसको तो रॉकेट का रॉकेट का तो वो जब भी ऊपर जाता है तब जो एनर्जी फॉर्म पाते हैं रॉकेट को बोला ही नहीं मैंने. न्यूक्लियर फ्यूजन का तो रॉकेट अलग चीज है. तो ये हो गया, ये मिटा दो. आपको लिखना है, बुक पढ़ोगे सारा समझ आएगा. यहाँ से खाली कॉन्सेप्ट समझ के, ठीक है. अभी न्यूक्लियर एनर्जी पे आते हैं. न्यूक्लियर एनर्जी में भी यही जनरेटर यूज होगा. देखो हमारा बुक see this, the turbine for nuclear energy, this is the turbine and this is the generator. Okay, ठीक है. अब उस टर्बाइन को रोटेट कैसे करना है? थ्रू द हीट जनरेटेड. न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है ना, तो उसमें बहुत सारा हीट निकलता है. तो वो हीट सब क्या करते हैं? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं. ये देखो, ये वाटर जो है यहाँ से ठंडा वाटर जा रहा है और यहाँ से स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम बन के बाहर आ रहा है. ये वाटर को गर्म कैसे किया? ये देखो, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, यहाँ पे यूरेनियम फ्यूल है, उसको हमने
ब्रेक किया, जब भी हम यूरेनियम न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं दो छोटे न्यूक्लियस में, तो बहुत सारा हीट प्रोडक्शन, ठीक है। वो हीट एनर्जी को ये देखो, ये एक क्लोज सर्किट लूप दिख रहा है यहाँ से, तो वो जो हीट एनर्जी है वो यहाँ से जब हम पास करेंगे तो ये जो ठंडा वाटर है वो स्टीम बन जाता है, और वो जो हीट एनर्जी वो कूल होकर वापस कूलेंट अंदर घुसे, ऐसा ये सर्कल चलते रहता है। यहाँ से वाटर का स्टीम आया, और यहाँ से हॉट एनर्जी आई, फिर ठंडी हो गई, फिर हॉट हो गई, ये चलते रहता है, ठीक है। तो चीज क्या है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, हाँ वो मैं बताता हूँ। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में there are two types of nuclear reactions. दो टाइप होता है, फिशन एंड फ्यूजन। फिशन में क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं दो छोटे न्यूक्लियस, ठीक है। क्या होता है, ये समझो बड़ा न्यूक्लियस का मास है m, दो छोटे न्यूक्लियस का मास है m1 और m2, ठीक है। तो ये हो गया फिशन। तो इनका जो कंबाइंड मास है m1 प्लस m2, ये क्या होता है, इससे छोटा होता है ओरिजिनल न्यूक्लियस। क्या होता है, ओरिजिनल न्यूक्लियस का जो मास था, यानी कि जो डॉटर न्यूक्लियस है, पेरेंट का मास उससे ज्यादा होता है, ठीक है। सो देयरफॉर अभी क्या आ गया, मास डिफरेंस आ गया, डेल्टा m इज इक्वल टू m माइनस m1 प्लस m। ये जो मास डिफरेंस है ना, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एज पर आइंस्टाइन फॉर्मूला, E is equal to mc square, ठीक है। ये जो डिफरेंस इन मास आता है ना, वही कन्वर्ट होता है एनर्जी में। Okay, so mass is not conserved in nuclear reaction. It is in chemical reaction, but not in nuclear reaction. ठीक है। So this difference in mass gets converted into energy. फ्यूजन में क्या होता है, उल्टा करते हैं, दो छोटे न्यूक्लियस है, उसको बहुत हाई टेम्परेचर में एक दूसरे में घुसा डालते, फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बड़ा न्यूक्लियस प्रोड्यूस। अब ये जो बड़ा न्यूक्लियस है उसका मास, ठीक है, वो भी कम होता है, पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस का मास कम होता है, ठीक है। सो दिस मास इज लेस। तो इसका मतलब अब क्या हो गया, अब यहाँ पे डेल्टा m क्या हो गया, m1 प्लस m2 माइनस, सॉरी बराबर माइनस। तो अब यहाँ पे एनर्जी कैसे मिलती है, डेल्टा m c स्पीड ऑफ लाइट, ओके। सो इसमें बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सन में जो एनर्जी हमको मिलती है ना, वो इसकी वजह से होती है। इसमें क्या, सन में कैसे होता है, सन में दो हाइड्रोजन, राइट। ड्यूटेरियम पता है हाइड्रोजन का, हाँ ड्यूटेरियम मतलब, ड्यूटेरियम पता है ना, हाइड्रोजन तीन फॉर्म में अवेलेबल है, 1h1 1h2 1h3। तो जो 1h2 उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ये दोनों मिलकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीलियम। तो सन के अंदर ये न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही दो हाइड्रोजन न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक हाइड्रोजन हीलियम न्यूक्लियस बनता है, बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, बहुत सारा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये होता ही है 10⁻⁶ केल्विन में, बहुत हाई टेम्परेचर लगता है। कितना, 10⁻⁶। 10⁻⁶ कहाँ पे है, सन के कोर में, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सन। सन के सरफेस का टेम्परेचर कितना है, अराउंड 6000 केल्विन, 6000 केल्विन है सरफेस का। कोर पे है कितना, 1 मिलियन केल्विन। तो उतना टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस नहीं है जो विथस्टैंड करेगा। तो राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी थ्रू फ्यूजन। और जो भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होता है कैसे, फिशन, ठीक है। तो फिशन में हम क्या करते हैं, यूरेनियम 235 को ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम 235 को, यूरेनियम क्या है हमारा, न्यूक्लियर फ्यूल है, ठीक है।
न्यूक्लियर फ्यूल। इसको हम ब्रेक करते हैं छोटे छोटे न्यूक्लियस में, लेकिन इसको ब्रेक कैसे करेंगे? हमको एक न्यूट्रॉन लगेगा, न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके ऊपर न्यूट्रॉन हमारा बुलेट है, इसको मारा, न्यूक्लियर फ्यूल हमारा टारगेट है, तो वो दो टुकड़े हो जाते हैं। जब वो दो टुकड़े हो जाते हैं तो समझो एक्स और वाई ऐसा दो न्यूक्लियस बनाता है, प्लस 3 न्यूट्रॉन हमको मिलता है। कितना मिलता है? अभी जैसे फ्यूल था उसमें हमने एक न्यूट्रॉन शूट किया, उसके टुकड़े किए उसने और 3 और बढ़ाए, वो 3 और यूरेनियम को शूट करता है और 3 बना देता है। तो हमको कैसे मिलता है? चेन रिएक्शन मिलता है। एक से कितना मिला? 3, तो 3 से 3, फिर हर एक से और 3, कितना रिएक्शन हो रहा है थर्ड स्टेज में? तो इसको क्या बोलते हैं? चेन रिएक्शन। अगर इसको ऐसे रिएक्ट करने दिया तो क्या होगा? ह्यूज एक्सप्लोजन। वही होता है एटम बम, अनकंट्रोल्ड। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, चेन रिएक्शन। हमने एक बार स्टार्ट किया प्रोसेस, अब वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? एटम में न्यूक्लियर बॉम्ब यही होता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो हमको क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है? हम क्या करते हैं, वो जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं ना उसमें से 2 को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ये वो कंट्रोल रॉड, ये जो कैडमियम रॉड है ना, ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। जो 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन उनको एब्सॉर्ब करके क्या करता है? एक मतलब कंट्रोल्ड वे में सस्टेन्ड एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। समझ आ गया? ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर, ये पूरा कॉन्क्रीट वॉल है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि इट इज हाईली टेक्निकल, very skilled manpower is required to run the nuclear plant. Plus there are so many strict safety norms that has to be practiced, okay. और जब न्यूक्लियर फ्यूल जल गया है, still it is radioactive, which is harmful for mankind. So it has to be disposed of very securely and safely. So there are a lot of challenges involved with running a nuclear power plant. So everybody cannot have it. You need highly technical and skilled manpower to basically produce energy using nuclear plant. But then it is very efficient, because what will take burning of tons and tons of coal, right? Same energy can be produced by just a kg of uranium. Once you load the nuclear reactor with nuclear fuel, it can continue to give you energy for very long time. Unlike coal, which you have to keep burning, loads of coal to produce electricity on a continuous basis. Is that clear? So you must have realized that there are challenges and benefits, okay, advantages and disadvantages of producing electricity by various sources, right? So, but still, the right side is still better, because we can actually so we can reproduce energy all the time. We can use and reproduce it. But here, once these reserves are over, right, we have to wait for at least 1 million years for it to, to be used again. So we are not going to survive 1 million years. We want energy today, right? So the results of these fossil fuels which have been on the earth right now will not last even next 50-60 years. So that's why we have to be using them very judiciously or cautiously. Okay? Can we think of surviving for about 2 hours without electricity? We can. Like, need to speak to your parents. What happens to her when there is no power in the house? She calm or chill? Yes. Feeling the heat. Feeling the heat. Electricity is still heat. Okay. So sometimes I joke, yeah, so समझ जाएगा. Why are you so serious? We were talking about electricity. नहीं वो हीट वाला वही तो जोक था कि एनर्जी डिस्कस करते सब प्रेशर आ गया है ऐसे. We were discussing a very tense thing, right? Nuclear reactor, ये वो
Okay. So have you understood how is this nuclear reactor working? Yes. क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर? ये क्लोज सर्किट है, यहाँ हीट प्रोड्यूस किया, वो हीट को इधर से हमने ठंडा कूलेंट डाला, वो कूलेंट ने पूरा हीट एब्जॉर्ब किया, पाइप से इधर आ गया, ये पूरा हीट चैम्बर है, ये हीट एक्सचेंज है यहाँ, तो वो बार बार से जो हीट है वो वाटर को गर्म कर देगा, वो स्टीम बन के फिर वो क्या चला रहा है, इट्स वेरी लॉजिकल डायग्राम. Okay, so if you now read this chapter yourself, you should be able to understand it. So can you just take few minutes to browse through what is there in this? And I'll explain what is called as energy degradation. सब ठीक है? Take 5 minutes to go through what we have covered. Then just one more topic is remaining. You're not well today or what? Okay. So take care. It's the weather is bad today. I was not sure whether I'll be able to reach Maragara, right? So it's raining, pouring down heavily. Take time to go through what we have covered. See if you have any comment. Anybody join online? Click on this. Click back on two. How many have seen today? One. Why is it not coming? Is function. So some schools are having exams. You have no different schools. All this. How many schools are there presently? Done. CGM and Kota. 3 schools. With Rainbow. Very colorful school. Rainbow. Who is called Rainbow here? See.
Finished? Anybody has any doubt or need more explanation? Simple? Okay. So next is degradation of energy. This I already explained in second chapter. Anyone remembers? Did I cover it in second chapter? Energy which goes in respiration. Yes, the one which is unuseful form of it, right? Also, what is degradation? Whenever we try to transform or convert energy from one form to other, it never gets fully converted. Some of it is wasted. Okay, so that wasted energy gets converted into unuseful form. So that's why we call it as energy degradation. So what are the cause, two main cause of it? So what is degradation? Meaning is during energy transformation. Because in electricity production, energy is available to us in different form, and that we are converting into electricity. So during energy transformation, some energy is lost in unuseful form. What is the unuseful form? Either heat or radiation loss. Okay, this is also called as dissipation. It is also called as dissipation. There are so many names, that's why people get confused, right? Why not just one? तो उसी को अलग-अलग नाम हो गया. Degradation, dissipation, unuseful form, all of them mean one and the same. Okay. So why is it happening? It is because of reason is existence of reason is friction, right? Friction. Is also. So this is what happens. So whenever you are using any system or machine, right? So there are various moving parts, and there is always friction which is existing, and therefore that is one. The other loss is in the form of heat and radiation. So what is this loss? So when you power a bulb, right? So electrical energy is used to power a bulb, but not everything is converted into light. The bulb gets heated, so that heat is lost in the environment. So not the entire electrical energy is converted into light. Some is lost as heat. Okay. So when you are cooking food, for example, you have an induction heater. So all the heat doesn't go into making food. The environment in the kitchen will become hot. So that is heat loss. That heat loss is through process of radiation. When you stand near a hot body, right, the environment will be hot because every hot body radiates heat energy. Okay, that is the radiation loss. Now, where is this friction? So when you rotate the turbine, right? So the water energy, hydro energy is rotating the turbine. So that mechanical energy, now in turbine, the bearings will become hot wherever it is rotating. So those friction. So moving part will become hot. So that kinetic energy of water is not fully converted into electricity. Some of it is lost as heat. So that energy is gone back to atmosphere, right? So once it is heat, then what it will do? It will heat the atmosphere. So atmosphere has become hotter.
Can you trap that atmospheric heat and start cooking food? No, that is lost. That's why it is called unuseful form of energy. Okay, so take 5 minutes to read through that also. See if you have any question. So this is a completely theoretical chapter. Let's take that part. See if you have any questions. Student used to come late. Today she did not come at all. What's her name? Tanya. No, girl. Manya. I think she sits behind. One who sits here is Danya. The one who sits behind is Manya. Very rhythmic coincidence. Danya, Manya, are they sisters? Distant relative? Coincidence. Both come late, and now they've stopped. For example, ठीक है, चलो पढ़ लो, let's see if you have any doubts. No doubt. तुम्हारा दिमाग बहुत जगह घूम रहा है. स्कोर अभी कौन सा मैच होगा, कितना मारेगा वो, कल इतने कंपनी को आउट हुआ. ठीक है, तो फटाफट आगे जाते हैं. कई बार क्या होता है मालूम, मेरा खुद का ये प्रॉब्लम है. वो पैराग्राफ को मैं देखते रहता हूँ, वो लाइन देगा, फिर से वही लाइन देगा, फिर से वही लाइन देगा और आगे क्या ऐसा होता है ना. So this means that brain is frozen right now. इसमें क्या करने का, छोड़ देने का, उठ के जाओ, होके मूव कर बैठ जाओ, ऐसा करते हैं. माइंड को अनलॉक करना जरूरी है. ये एक्चुअली छोटी छोटी चीज, these are psychological factors like brain if it is not focused ना, तुमको बहुत टाइम लगेगा एक पेज करने के. तो कभी भी देखना, जब भी तुम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करोगे, जस्ट पढ़ने बैठे हो, तो शुरू का आधा घंटा वो रिदम नहीं मिलता है, और रिदम नहीं मिला और फिर आधे घंटे में तुम थक जाते हो क्योंकि किताब के साथ बैठे. ठीक है, तो मम्मी को लगता है बेटा बहुत पढ़ाई कर लिया, एक चाय का कप, फिर बिस्किट, थोड़ा ये और खा के वो और लेजी हो गई. ऐसा होता है ना, बेटा कितना पढ़ाई कर. मम्मी को मालूम है नहीं पढ़ रही है. She does not trust you. दिखने में और होने में जो फर्क होता है ना, पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअली पढ़ नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये जस्टिफिकेशन तुम लोग खुद ही कर सकते हो. आगे बढ़े फिर. हाँ, डिग्रेडेशन सिंपल है, जब हमने पढ़ लिया ना सेकंड चैप्टर में. किसी को कोई डाउट है तो कुछ डाउट है, तुम्हें कोई डाउट है पक्का? चलो लेट्स प्रोसीड. तो एग्जांपल्स वगैरह बहुत ही सिंपल है. अब इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं. ठीक है, दिस इज कंप्लीटली वेरी बेस्ड. नेक्स्ट पार्ट इज, what is the next part? Greenhouse effect. And global warming. यही है ना? ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है पहले तो ये समझते हैं. देखो, this is Earth's surface. ठीक है, so this is Earth's surface. Earth's surface is surrounded by atmosphere, right?
अगर ये अर्थ का सरफेस है तो एटमॉस्फेयर उसके चारों तरफ है ना? अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर। अब अर्थ पे क्या हो रहा है? What is the primary source of energy for Earth? ठीक है ना? यानी जो भी हमने देखा, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स था, सोलर, विंड, हाइड्रो, सबके अंदर जो एनर्जी आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसकी एनर्जी है? सन की। सन नहीं होगा तो विंड भी नहीं होगा, ठीक है? सो ये सब कुछ है। और सन नहीं होगा तो वाटर इवोपरेट नहीं होगा, तो फिर वाटर नीचे नहीं आएगा, तो वाटर वो साइकिल भी नहीं होगा। तो अल्टीमेटली द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। और सन से एनर्जी अर्थ पे आती कैसी है? इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है? इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन, ठीक है ना? सोलर रेडिएशन, सन की जो रेडिएशन उसको क्या बोलते हैं? सोलर रेडिएशन। अब वो रेडिएशन के अंदर व्हाट इज रेडिएशन? यू नो ना, रेडिएशन इज वेव। रेडिएशन मतलब कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा वेव है? Electromagnetic wave. You will study about it in 10th standard. Have you studied about it? Heard about it? Electromagnetic. So radiations are basically electromagnetic waves. ठीक है? And waves are modes of transport of energy. Waves carry energy. Okay? So that is, ये छोड़ दो, next 10th में देखेंगे। ये जो रेडिएशन है, इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन हाई एनर्जी रेडिएशन एंड सर्टेन लो एनर्जी रेडिएशन। सोलर एनर्जी कैसा होता है? अलग अलग फॉर्म में। सो देयर आर सर्टेन हाई एनर्जी रेडिएशन। उसमें क्या आता है? गामा रेज, ठीक है, एक्स रेज, और क्या आता है? अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज। It was like somebody was hammering on it. Okay, isn't it? थोड़ा चला रहा नहीं लग रहा था? अभी कितना लीटर मिली है? हाँ? So high energy radiations में क्या होता है? क्या गैसेस है? हाइड्रोजन का क्या है? हर सरकार कुछ ना कुछ रहता है। तुम केमिस्ट्री वाली क्लास वाला, अरे वो फिजिक्स वाला सर, कभी बच्चे रहते हैं और मास टाइप के। चलो, तो हाई एनर्जी रेडिएशंस, ठीक है? यह है गामा रेस, एक्स रेज है, यूवी रेस, ठीक? लो एनर्जी रेडिएशन में क्या आता है? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, देन यू हैव रेडियो वेव्स, ठीक है? ये सब सुनी सुनी चीजें लग रही है ना, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स। हाँ, तो मेरे को बच्चा हो रहा है, ठीक है, ठीक है। सो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आईआर। एनकेटी सर है क्या वो? हाँ, ठीक, नहीं एनकेटी नहीं निकिता wife, because he's also a teacher. यार का नहीं। His wife's हाँ, वो बोल रहे थे कृष्ण तिवारी, पता नहीं उनका है कि उनके पिताजी का है, या फिर जो भी होगा। नहीं, कृष्ण सर उनका ही नाम होगा। वाइफ के आगे हस्बैंड का नेम लगता है, और बेटे के नाम के आगे डैडी का नेम लगता है। पता नहीं है, महाराष्ट्र में ना ये बहुत नाम का बड़ा मिक्सचर हो गया है ना? नाम का मिक्सचर होता है, पहले तुम्हारा फिर पिताजी का मिडिल नेम। ये मिडिल लेवल नेम का कॉन्सेप्ट नहीं है नॉर्थ में। महाराष्ट्र में ऐसा है, नॉर्थ में नहीं है ऐसा। इधर नॉर्थ में सिर्फ इनिशियल होता है और सरनेम होता है। ये मिडिल नेम का कॉन्सेप्ट है। महाराष्ट्र में और साउथ में तो और ग्रेट है, वहाँ उनका नाम, पिताजी का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम, साउथ में तो सिर्फ मालूम है। वो पीवीआर नरसिम्हा राव
उसमें वो उस लिस्ट में 4 अच्छे आए थे। वही तो ये मतलब और डाइवर्सिटी है अपने कंट्री में, मतलब वन से साउथ में ट्राई। और फादर अगर मेरे पापा रहेंगे वो मेरे दादा का नाम बीच में लगाएंगे और इसकी वजह से मेरा इतना पंगा, अब जैसे मेरा फुल नेम है उदय लक्ष्मी नारायण सिंह, ठीक है, नो लक्ष्मी कम ऑन, सो उदय लक्ष्मी नारायण सिंह, उदय लक्ष्मी नारायण मेरे पिताजी ने सिर्फ मेरा नाम रखा, डैडी का नाम हो जाता है हृदय नारायण। तो मेरा जो डिग्री है एमएससी का महाराष्ट्र में आने के बाद इट रीड्स उदय लक्ष्मी नारायण हृदय नारायण सिंह, वो पूरा डिग्री में से नाम लिखा है मेरा, ठीक है। तो मैंने जो काम किया वो कहाँ लिखेगा मालूम किधर? अरे तो क्या ये सब कानून लॉ पढ़ना चाहिए, फिजिक्स। ओके चलो, तो अभी हाई एनर्जी देखनी है और लो एनर्जी देखनी है, ये सब हाई एनर्जी लो एनर्जी देखनी है, ठीक है। बीच वाला जो एनर्जी वो क्या है? बीच वाला एनर्जी सबको दिखाई देते हैं, बीच वाला एनर्जी क्या है? विजिबल रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन। वो क्या होता है? विब ग्योर, क्या होता है? विब ग्योर, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एनर्जी रिड्यूस होता है, वॉलेट का एनर्जी ज्यादा है, रेड का एनर्जी कम है, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा? एनर्जी रिड्यूस होगी। तो ये वाली तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसमें क्या क्या है? जो अपर लेयर है वो क्या है? आयनोस्फीयर है ना, आयनोस्फीयर। और यहाँ का जो लेयर है बीच में जो अर्थ की साइड पे वो क्या है? ओजोन। ओजोन क्या होता है? O3, ठीक है। तो जो पूरा हाई एनर्जी रेडिएशन है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ये डायरेक्ट आ गया, हम उसको एक्सपोज हो गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। क्यों? ये बहुत हार्मफुल है, these are all very harmful for us. So गर्म नहीं, ये ऊपर पड़ेगा ना तो गर्मी लग रहा है कि नहीं, वो सेंस करने के लिए नहीं बचेगी, गायब हो जाएगा, भस्म होता है ना, भस्म हो जाएगा सीधा ऐश, ठीक है। तो ये वो है गामा। अभी तो वो लेजर गन्स वगैरह आ रही है ना इसमें, तो जस्ट यू नीड टू शो द गन एंड यू आर गॉन, नो बुलेट एंड नो ब्लड डिस्चार्ज, क्लीन पेनलेस डेथ। वो कहीं किसी ने सामने शीशा रख दिया तो अपन भी गए, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इट्स वेरी डेंजरस। अब कोई पता चल गया वो बुलेट प्रूफ की बजाय शीशा पहन के घूम रहा है, मारो गन, तुम अगल बगल वाले भी सारे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये है। तो अंदर क्या आता है? देखो अंदर सिर्फ ये विजिबल रेडिएशन आती है, अंदर क्या आता है? विजिबल रेडिएशन। और कौन सी रेडिएशन आती है? लो वेवलेंथ या स्मॉल वेवलेंथ इंफ्रारेड वेव्स। क्या होता है? स्मॉल वेवलेंथ IR वेव्स, ठीक है। अगर तुम लोग मुझे हंसा दो ना, पढ़ाना छोड़ो, मैं भी बहुत बैठ के हंसूंगा। ओके, तो विजिबल रेडिएशन एंड इंफ्रारेड रेडिएशन ही सिर्फ अंदर आता है, ठीक है, बाकी कुछ अंदर नहीं आता है। उससे ही अर्थ की एनर्जी कितनी हो गई? अर्थ एवरेज टेम्परेचर इज 15.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ है। ये जो एनर्जी अंदर आती है उससे क्या होता है? अर्थ हीट हो रहा है, ठीक है, अर्थ हीट होते जा रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है? इंफ्रारेड रेडिएशन। ये क्या विजिबल है? नहीं। तो विजिबल सिर्फ ये, लेफ्ट भी विजिबल नहीं है, राइट भी विजिबल नहीं, विजिबल सिर्फ। अच्छा, इंफ्रारेड में दो टाइप्स के वेव होते हैं, एक स्मॉल वेवलेंथ, एक लॉन्ग वेवलेंथ। तो जो लॉन्ग वेवलेंथ है, तो लॉन्ग वेवलेंथ IR रेज एंड रेडियो वेव्स, ये क्या हो जाता है? आयनोस्फीयर जो है वो उसको बाउंस बैक कर देता है। लिसन
long wavelength infrared rays and radio waves, they get deflected by ionosphere. जो upper layer of atmosphere है, हंस लो पहले कौन किसको देख के हंसी आ रही है अभी हो गया टाइम हो गया ब्रेक का टाइम 30 पे ही हो जाना चाहिए था ना उसने बेल बजाया नहीं ठीक है विल टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स ठीक है ये रब मत करना ओके आई विल कंटिन्यू द एक्सप्लेनेशन यार कभी-कभी मैं वजह नहीं इसके साथ दूसरी और उसके पहले ही तो उसको ब्रेक नहीं देना टाइम होता देना टाइम होता है ऑब्वियसली So where is the big boy? Rugby, right? Okay, so Ravi, so what enters Earth's atmosphere? Come fast. What enters Earth's atmosphere? Okay, so focus now. Is he playing some game or? Shall we start? हाँ सर वो अटेंडेंस है उसको बोल देंगे साइड वाले को बोल देंगे ओके इसमें मुझे समझा नहीं क्या बोल रहे थे तुम नहीं मैं बोल रहा था आपने डाला तो चलेगा मैंने वो बोले नहीं लेके आता अच्छा दोबारा सेकंड लेक्चर में हाँ अच्छा देखो तो कौन सा रेस अंदर घुसता है एटमॉस्फेयर के खाली विजिबल और स्मॉल वेवलेंथ इंफ्रारेड रेस ठीक है जो लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेस है और जो रेडियो वेव है वो क्या होता है ऊपर से ऊपर ही क्या होता है डिफ्लेक्ट हो जाता है अंदर नहीं आता है आयनोस्फीयर से डिफ्लेक्ट हो जाता है ठीक है अब देखो अब ये इंफ्रारेड वेव्स और ये सब जो है ये जो अंदर आती है वो क्या होती है कुछ तो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है
ठीक है, एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है। बाकी क्या होता है, अर्थ के सरफेस को यानी अर्थ को हीट इनपुट मिल के अर्थ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, because of all this the average temperature of earth is 15.5 degrees Celsius and therefore it is habitable, therefore human life can exist on earth. ये नहीं होता तो earth's average temperature would have been roughly minus 18 degrees Celsius and it would not have been habitable. ठीक है, तो कोई लाइफ होती नहीं है। अच्छा, अब क्या होता है, there is something called as greenhouse gas. Greenhouse gas. क्या होता है greenhouse gas? ठीक है, CO2, then you have methane also, CH2, and here CFCs, chlorofluorocarbon. Okay, so then you also have ozone as a greenhouse gas. Okay, so ये सब gases they are available in the atmosphere in some proportion. ठीक है, so because of these gases what happens when earth gets heated, so any hot body radiates infrared waves back, but these infrared waves are of long wavelength. What did I say? What did I say? The hot earth now radiates back long wavelength infrared rays. Okay, these long wavelength infrared rays are absorbed by these greenhouse gases. Okay, that means they are not able to like what is he saying and why would he laugh? वही मुझे हंसा। थोड़ा शिफ्ट हो जाए, नहीं थोड़ा शिफ्ट हो गया, बैठ वो दिखेगा नहीं तो बोर्ड पे। It becomes difficult to punish students once teacher becomes friendly, you know. So then I have to act tough, right? Shift. Okay. So these greenhouse gases will then absorb this long wavelength infrared rays. So they are not able to escape atmosphere. And once this atmosphere becomes hot, so then there is a exchange of heat between atmosphere and earth. तो वो बाहर जाके कूल नहीं हो पा रहा है और वो उसको और heat मिल रही, तो heat keeps on coming back and forth between the atmosphere and earth. So what is it leading to? It is leading to rise in the temperature of earth and atmosphere. Okay, तो उससे क्या होता है? This then leads to what is called as global warming. What is global warming? The absorption of this long wavelength infrared waves, right? So basically what has happened is, are these gases necessary? Yes. Yes, in moderate proportion, yes, because otherwise earth temperature will reach here. We don't want that, right? But what has happened is the population growth, right? So advancement in medical sciences, right? So it is not letting the population die at a large scale. So one is, there is population and it is only growing. So everybody needs house, huh? And population means we are inhaling oxygen and giving out carbon dioxide. So the carbon dioxide is going on increasing in the atmosphere. On top of it, we have automobiles. So every house, it used to be like 10-20 years ago, it used to be luxury just to have a car. Today, one house has 2 to 3 cars, right? Or like multiple number of 2-wheelers and 4-wheelers. So they also generate a lot of greenhouse gases, right? Carbon dioxide, nitrous oxide, all those things. Okay. Then we burn a lot of biomass, etc. So that produces a lot of methane, right? And rice, agriculture, rice production. So that rice fields produce a lot of methane. Then I told you about natural gas, CNG. So we are like, whenever we take out CNG, some wastage takes place. So that wastage is again going into atmosphere.
Plus we have air conditioning, right? So we have rice crops. Okay, that leads to a lot of methane. Then we have air conditioning everywhere. बगैर air conditioning के चलता नहीं है तुम लोगों को. तो ये CFC बना रहे हो, ठीक है? But now we don't use CFC as the coolant in the AC. We use eco-friendly refrigerant now, ठीक है? But पहले का जो हम use कर चुके हैं वो सब तो है atmosphere में. Refrigerator also produces. CFC is needed for producing cooling in refrigerant. It's a cooling agent. It's called refrigerant. Refrigerant. Let's check the spelling. So unless we have refrigerant, cooling होगा नहीं, ठीक है? But now we don't use CFC. We use something else which is eco-friendly. Eco-friendly means it does not produce greenhouse gas. Anything which produces greenhouse gas is contributing to atmospheric pollution. Okay. Anything which is not contributing to greenhouse is green or eco-friendly. So I said air conditioning leads to production of a lot of CFCs. Air conditioning. Okay. So what is happening because of rapid rise of greenhouse gases in the atmosphere? Now less and less IR is going out, right? And the atmospheric temperature is just going on increasing at the rate of almost 2.5 degrees Celsius per decade. Okay? So since 1900 to 1950, it was rising at the rate of little less than 1 degree Celsius per decade. Right? But in last 30 years, it has risen at this rate every decade. So if it continues to rise at this rate, then by 2100, we are expecting Earth's average temperature to reach 65 degrees Celsius. Okay. So how cool is that? 60. What is the average temperature of Mumbai? 30 to 30 आसपास. उसमें ही सबकी बैंड बजी रहती है. पसीना हो रहा है, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, ऐसा चलते रहता है. जब 65 हो जाएगा तब क्या करेंगे? Like PPE kit will be wearing air conditioning kit and moving or what? फिर evaporator कहाँ टांगेगा? इधर तो स्कूल बैग होगा, evaporator यहाँ लगाएगा, कहाँ लगाएगा? जो कूलिंग करता है, ये डब्बा कहाँ रहेगा? सबके लोग तो ऐसे ट्रेन बजाएंगे. So we are up for some bad times ahead if we don't wake up. So all is not lost. Just we have to change our ways. So अपना lifestyle में कुछ changes करना पड़ेगा. What changes? So that we limit the production of these dangerous greenhouse gases in the atmosphere. वो करना पड़ेगा. That is why, and who are the biggest? Open the windows. Where are you going in sky or what? You are still in the atmosphere, right? Open the window so that outside gas will go inside. Oh, I thought that. I wish solution was that simple. Open the window and sleep. Sleep on top of the tree. That is not going to help. You know how long is this? You know how long is this? Roughly 300 to 400 kilometers. Okay? Only this much. 300 kilometers. After that is space. Atmosphere is this much. 300 to 400 kilometers. Okay. Where was that? So, who are the biggest contributor to this? The biggest contributor to this roughly 24% or 24%, right? Just check the book. It is the power plant. जो fuel बंद करते हैं ना electricity बनाने के लिए. The biggest culprits are these guys, the power producing companies. How much is it? 25% के आसपास आता है power production companies. ठीक है. उसके बाद में 14% पे क्या आता है?
What is the next? Automobiles. ठीक है, these are the two major contributors to greenhouse gases. ये कार्बन, ठीक है, और बाकी सब तुम्हारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ ये वो सब जो बढ़ाते जा रही है पब्लिक, है ना, पब्लिक बढ़ाते जा रही है, ये गड़बड़ है। तो अभी तो बढ़े जाएंगे, फिर बाद में क्या होगा पता नहीं। बट एनीवे दीज आर लाइक स्पेकुलेशन, पता नहीं इसमें कितना सच है कितना नहीं। 1900 से बोल रहे हैं, अभी तो अपन तो निकलने का टाइम आ गया। फ्रॉम द हेवेंस आई विल सी क्या कर रहे थे। इफ आई वुड दूसरे साइड में हेल भी होगा तो वहां से भी इंटरफेयर कर रहे हैं। समझ आ गया? सो यू जस्ट डोंट बी कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैस और मिनिमम कंट्रोल, जितना कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ऑल दिस? सो वी नीड टू नो द इम्पैक्ट। So global warming समझ आ गया ना? Global warming means the increase in overall effective increase in average effective temperature near the Earth's surface due to an increase in the amount of greenhouse gases in its atmosphere. वही global warming। उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से क्या होगा इम्पैक्ट? देखो, variable changes in the climate in different parts of the world has created difficulties and forced people and animals to migrate from one place to another. Are we seeing changes in weather around us? Are we seeing that? No? Yes. Uttarakhand, you know, na? It is northern state of India, near Himalaya. Near Himalaya. It is generally a cold region, supposed to be. Recently, there was a fire in the jungles of Uttarakhand. Do you remember the news? So there is a forest fire which is taking place, right? Never unheard. It was unheard of. So these are the climatic changes. Bangalore में flood. Have you ever heard about it? Flood in Bangalore. Bangalore में flood. मुंबई का flood मालूम है. Bangalore में कभी flood नहीं आया. First time. हाँ? So अभी Bangalore में flood आ गया. Right? Have you seen floods in Rajasthan? Flood in Rajasthan. Rajasthan is supposed to be desert, right? It is getting flooded. September में बारिश हो रही है। This September में तो होता ही है. Not this dense. थोड़ा कम. Yes. तो ये सब तुम देख रहे हो ना, तुम्हारी लाइफ टाइम में होना शुरू हो गया, ठीक है? और 65 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो जो अभी सॉइल जहाँ पे निकल रहा है खाना पीना, वो क्या हो जाएगा? डेजर्ट बन जाएगा। फिर अपन क्या खाएंगे? खजूर। अगर उगा तो, नहीं होगा तो फिर तो ठंडन गोपाल रहेगा। ठीक है, तो ये बचना है ना? तो जो लैंड का वो भी है, अभी राजस्थान में बारिश होती रहेगी तो वहां पे सॉइल आएगा, और जहाँ पे बारिश नहीं होगी वहां पे क्या बन जाएगा? रेती बन जाएगी। तो बहुत गड़बड़ होने वाला है आगे चल के, अगर ये सब सही है तो। सब्जेक्ट टू दिस थिंग्स, ठीक है? तो सेकंड पॉइंट क्या है? ब्लूमिंग सीजन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैज चेंज्ड, यानी जो क्रॉप का प्रोडक्शन जिस टाइम पे होता था वो भी चेंज हो गया। अभी किसान भी पागल हो रहा है कि मतलब क्या हो, है ना? अलग अलग टाइम पे सब हो। रीजनल क्लाइमेट which has an immediate effect on simple organism and plants has also changed, ठीक है? World's ecology has changed. Ecology मतलब living and non-living beings दोनों में changes आ रहे हैं। अगर जहाँ पे moderate temperature था वहाँ बढ़ गया तो जो लोग वहाँ रह रहे थे वो वहाँ रह नहीं सकते, उनको कूलर जगह पे जाना पड़ा, ठीक है? So there is a demographic shift, right? Deaths due to heat strokes have increased. अब टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा? हीट स्ट्रोक आएगा, तो उसकी वजह से भी डेथ ज्यादा हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जो बैक्टीरिया है इट सर्वाइव्स लॉन्गर इन हॉट वेदर, तो उसकी वजह से डिसीज विल परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। सो वी एक्सपेक्ट डिक्रीज इन पॉपुलेशन आल्सो। ये खुशी की बात है एक्चुअली, है ना? और पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो जो बचेंगे उनके लिए ठीक हो जाएगा। ठीक है।
Okay, so this is like, you know, you can read and understand. It's most of it is what I've said, right? Like future prediction में क्या देख सकते हो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो dislocation and disappearance of plant and animal species. You can see warming of oceans. Oceans form होगा तो क्या होगा? Ocean के अंदर भी अलग-अलग टाइप के जीव जंतु हैं. तो कुछ ठंडे जगह पे रहते हैं, लाइक करते हैं, कुछ हॉट वाले में. तो जो हॉट वाले हैं वो सडनली उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी सी में, और जो ठंडे वाले हैं वो गायब हो जाए या कम हो जाए, है ना. ये सारी चीजें. मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, उससे क्या होगा? ग्लेशियर्स क्या होता है? फ्लड हो जाएगा. हाँ, ग्लेशियर क्या होता है? हिल के ऊपर जो आइस की फॉर्मेशन है, ice formation on top of hill is called glacier, and the ice formation in sea is called icebergs. Okay, जो कि पोल में, एंटार्क्टिक और आर्कटिक रीजन में होता है, ठीक है. वो सब मेल्ट होने लगेगा. अब वो बहुत बड़े बड़े क्लस्टर्स हैं, अगर वो मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा? सी का जो वाटर लेवल है वो राइज हो जाएगा. इट कैन राइज बाय एज मच एज 5 to 6 meters. ठीक है. तो वो होने से जो कोस्टल रीजन है वो सारा सबमर्ज हो जाएगा. तो तुम कहाँ जाओगे? पानी के अंदर. विंडो बंद करने से शायद तुम लेट जाओगे. 6 मीटर पानी विंडो के ऊपर और तुम्हारा विंडो बंद, दरवाजा तुमको खोलना नहीं. वाटर क्योंकि टीवी से खड़ा है, टीवी से. टीवी में देखना कुकिंग, ये डालो, ये पक गया, अब इसी को देखते देखते खा लो. क्या करोगे तो मुझे बड़ी चिंता हो रही है. टीवी में सुपरमैन चला लेना. विंडो बंद, सुपरमैन डांस करता है. यहाँ भूख लगी, ठीक है. तो बहुत संकट की स्थिति है. तो बचने का उपाय सोच लो तुम. विंडो बंद करने में काम नहीं चलेगा. अच्छा, ठीक है. ये कहानी एक हो गई इस चीज की, ग्लोबल वार्मिंग, शिफ्ट इन फार्मिंग रीजन. तो जैसे जैसे देखो ये सारा खेल वेदर का है ना. तो इफ इट कीप्स ऑन चेंजिंग तो ये सारे रिलेटेड चेंजेस है. इट्स नथिंग. इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग भी हो जाएगा, क्योंकि 65 डिग्री पे तो बगैर एसी के चलने वाला नहीं है. तो ये सारा चीज तुम समझ सकते हो, ठीक है. चेंज इन सी लेवल मैंने बताया. तो इससे बचने का क्या तरीका है? हाँ, हाउ डू वी सेव आवरसेल्व्स? वेज टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो 3 वेज है, ठीक है. 3 लेवल पे हमको स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर हमको बचना है. तो बचेंगे तो क्या, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुआ तो क्या नहीं मरेंगे? हमारे पहले वाले मरे नहीं क्या मगर ग्लोबल वार्मिंग? तो सब मरेंगे, लेकिन कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से जाएगा. तो स्विमिंग सीख लो. स्विमिंग सीखने से कोई बचेगा नहीं? बचेगा. ये मैं बिठा रहा हूँ, ठीक है. ये समझ आ गया ना? अभी जो भी एक्सप्लेन किया पढ़ोगे सारा समझ आ जाएगा. देयर इज नथिंग व्हिच यू कांट अंडरस्टैंड. तो अब हमको समझना है कि कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग से बचें. तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू टेक मेजर्स सो दैट प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज मिनिमाइज्ड. ठीक है ना. क्योंकि सारा गड़बड़ किसकी वजह से हो रहा है? राइज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है. तो ग्रीन हाउस गैस हमको चाहिए, लेकिन मॉडरेट मेजर्स में चाहिए. एक्सेस हो रहा है. सो मेजर्स to minimize क्या है? ग्लोबल वार्मिंग. The impact of global warming. हाँ, The impact of global warming. हाँ, minimize impact of ग्लोबल. तो इसका मतलब समझ रहे हो? इम्पैक्ट तो होगा लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा. तो सबसे पहला है टेक्नोलॉजिकल मेजर्स.
तो उसमें सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, वी विल शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूटर कौन था, थर्मल पावर प्लांट्स, फॉसिल फ्यूल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। तो हम क्या करेंगे, वी विल मूव टू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, ये सबसे पहले है। दूसरा मेजर कंट्रीब्यूटर क्या था, ऑटोमोबाइल था। तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, पेट्रोल एंड डीजल, वो हम शिफ्ट कर देंगे बैटरी ऑपरेटेड। ठीक है ना, सो बैटरी ऑपरेटेड ऑटोमोबाइल पे शिफ्ट हो जाएगी। तो बैटरी ऑपरेटेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें एग्जॉस्ट पाइप होएगी नहीं। आजकल इलेक्ट्रिक बसेस देखते हो, कार भी आ गए, नेक्सॉन कार भी है। तो जो भी ग्रीन नंबर प्लेट वाला दिखता है, ग्रीन नंबर प्लेट, हाँ, दे आर ऑल इलेक्ट्रिक कार्स, ईवीज, बैटरी ऑपरेटेड automobiles. So we have to shift to, वो सब पहले से है, ये पूरा पॉलिटिकल गेम है। These Arab countries, they are not letting these technologies grow, नहीं तो उनका तेल कौन खरीदेगा। तो पहले भी पायरेट्स और बैंडिट थे, फिर से वही काम करने लगेंगे। हमारी शिप जाएगी, पहुंच जाएगा उधर लूट खसोट करने के लिए। तो पहले वही किया था उन्होंने, तो अभी तेल मिल गया बोल के इतना उछल रहे हैं। गाड़ी सबको चाहिए ना, बैटरी वाले लेना आगे चल के। मैं खुद डीजल में घूम रहा हूँ, लेकिन उसको बंद करना है। क्या बैटरी क्या इधर जाने का रहेगा 6 घंटा। अरे अभी सब चाइना वाला कर रहा है, लेकिन हम हमारी कंट्री में भी बनने वाला। टाटास एंड रिलायंस, दे आर गोइंग टू हाइड्रोजन फ्यूल, वी आर गोइंग टू हाइड्रोजन फ्यूल, जो पानी से बनाएंगे, पानी से हाइड्रोजन बनाएंगे और उससे गाड़ी चलेंगे। Already Nitin Gadkari, our transport minister, he has a car which runs on hydrogen. So we are going to eliminate that carbon chain completely. So battery operated automobiles, ठीक है, ये हमको दूसरा करना पड़ेगा। और इसमें तीसरा क्या है, बायो कैप, जो बायोमास हम यूज करते हैं ना, उसके लिए एक अलग टाइप का चूल्हा बनाएंगे, बायोकैर। उसमें क्या होगा, चूल्हा मीन्स स्टोव, बायोकैर स्टोव, चूल्हा, चूल्हा मालूम है नहीं, चूल्हा, चूल्हा, ठीक है, स्टोव। दिक्कत तो ये तुम लोग अंग्रेजी समझते हो, हिंदी समझते नहीं, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा, ठीक है। चूल्हा, चूल्हा नहीं, चूल्हा, एक इसमें एक ये होता है, चुल्ली मतलब क्या होता है, चुल्ली पर पानी, थोड़ा सा पानी, चुल्लू होता है। चुल्ली का मतलब होता है मस्ती को, इसके अंदर वो चुल है, बोलते हैं ना, बहुत चुल, तो चुल्ली, जिसमें चुल है वो चुल्ली है। ये हो गया, इतना इंटरेस्टिंग है नहीं। चलो, तो इंटरेस्ट को बंद करो, बैक टू बिजनेस। ओके, बायोगैस स्टोव्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इट विल कट डाउन ऑन मीथेन प्रोडक्शन, विल कट डाउन ऑन CH4 प्रोडक्शन, ठीक है ना। क्योंकि जो बायोमास हम यूज करते हैं तो उसका जो बाई प्रोडक्ट है वही मीथेन बहुत निकल जाता है एटमॉस्फेयर में। अभी हम ये स्पेशल स्टोव बनाएंगे, तो इसमें क्या होता है, ये स्टोव में क्या होता है, इधर देख चुल्ली, इधर देख, ये जो बायोटर में हम यूज करेंगे तो वो क्या करता है, मीथेन बनाने की बजाय क्या बना देता है मालूम है, चारकोल बना देता है। तो चारकोल क्या, ब्लैक डिपॉजिट्स स्टोव में आ जाएंगे, वो निकाल के वी कैन बरी इन द सॉइल, तो एटलीस्ट इट विल नॉट गो इन द एटमॉस्फेयर। सॉइल थोड़ा, अभी हम न्यूक्लियर फ्यूल का जो वेस्ट है, वी आर एनीवे डिस्पोजिंग, राइट, तो वो तो पूरा एटमॉस्फेयर करने से, क्योंकि डिफ्यूज होकर सब जगह पहुंच जाएगा, दिस वी कैन लोकलाइज ना इन सम एरिया। यू हैव अ पॉइंट, इसको भी देख के करना पड़ेगा। ग्राउंड वाटर टेबल में चला गया तो हमारा ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेट कर सकता है, तो इट हैज टू बी लाइक सोफिस्टिकेशन एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, जो भी डिस्पोजल है इट हैज टू बी मैनेज्ड। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा टेक्नोलॉजिकल मेजर। दूसरा क्या है,
अच्छा, इकोनॉमिक मेजर बहुत बढ़िया है, उसमें हम लगा देंगे कार्बन टैक्स इंडस्ट्री में, ठीक है। जिसने अपने अपने जो मशीनरी है उसको अपग्रेड नहीं किया न्यू टेक्नोलॉजी पे, अगर उसकी मशीन से ज्यादा पोल्यूशन आ रहा है तो उस पे हम क्या डाल देंगे, कार्बन टैक्स। तो एक तो कार्बन टैक्स, पुरानी गाड़ी के इंजन पे रहता है। हाँ, यस यस, दैट्स व्हाट इट इज, QC। हाँ, सर वो भी नहीं, और जो पुरानी पोल्यूशन गाड़ी अंडर रहती है ना, कंट्रोल, हाँ, वो भी अभी चलाने को देती नहीं नहीं उसका देते, ये- यस, हाँ, तो वो भी मेजर है, हाँ। वो भी मेजर है। वैसे ही कार्बन टैक्स लगाएंगे, मतलब दो तरह से अभी होता है मेरे कार्बन टैक्स। होंडा स्ट्रीट है, वो चलाने को देती नहीं। अच्छा, तो कार्बन टैक्स में दो तरह से, एक तो जिसने नया टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, बेनिफिट देगी, मतलब रिफंड देगी, और जो ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है उसको टैक्स मारेगी, ऐसा। तो एक को मोटिवेट करेगी, दूसरे को डीमोटिवेट, समझ आया। तो एक तो ये हो गया, तो एक तो कार्बन टैक्स, मतलब ये क्या है, इकोनॉमिक मेजर्स। और क्या है इकोनॉमिक मेजर्स में, खाली कार्बन टैक्स है क्या? Reforestation of sustainable use of land. यस, तो ये तो सेकंड नंबर पे था, पहला क्या है, रिफॉरेस्टेशन। अभी देखो, रिफॉरेस्टेशन हमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, फॉरेस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन देता है। अगर हमने कट कर दिया फॉरेस्ट तो क्या हो जाएगा, कार्बन एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेयर में ही रह गया, है ना। तो हमारी जब भी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, when there is a rise in population, तो हम क्या करते हैं, हमको घर बनाने हैं तो फॉरेस्ट कट कर दिया, इंडस्ट्रीज लगानी है, क्योंकि वो पॉपुलेशन को हमको क्या देना है, जॉब्स देना है, इंडस्ट्रीज। तो ये बड़ा गड़बड़ है। So basically now we have to do a balance of forest reforestation and ये सब इम्पोज करना पड़ेगा पेनल्टी, तो ही जाके वो कंट्रोल हो। बिकॉज हम लोग बगैर डांट खाए कोई काम नहीं करते, है ना। डंडा वाले पब्लिक है हम लोग, हमारा डंडा सब लाइन पे आते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसीलिए तो ये कहावत यहाँ पे चलती है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक मेजर्स हमारा सेकंड मेजर है। इनफैक्ट भूत बात से मानते ना, उनको लाठी छीनते, ठीक है, इसलिए तो उनको भूत कहा गया था। ओके, भूत बोलते हुए तुम्हारी तरफ क्यों देखा, ऐसे ही चला गया, मैं ऐसे ही भूत के बारे में बात करना देगा। ओके, इकोनॉमिक मेजर्स लास्ट, ये बहुत खुश हुई, खुश हुई, अभी मैंने तुमको बहुत खुश हुई। पॉलिसी मेजर में क्या होगा बताओ। सबसे पहले तो पॉलिसी, एडुकेटिंग क्या, sustainable life. नहीं, दोनों भी बोल सकते हैं, दोनों भी है, Controlling population to that is by, अच्छा, कंट्रोलिंग पॉपुलेशन बाय एजुकेटिंग वुमेन ओनली, व्हाई नॉट मैन, सिर्फ वुमेन को एजुकेट करने के लिए। We should protect all women. Controlling population through family planning, welfare reforms and empowerment of women. क्या हमको ताकत की जरूरत नहीं है, हम झंडा उठाएं, ठीक है। एजुकेटिंग चिल्ड्रन टू लिव अ सस्टेनेबल लाइफ, तो ठीक है, ये पूरा एजुकेशन से हम कंट्रोल करेंगे। एजुकेशन मीन्स स्प्रेडिंग अवेयरनेस, मतलब हर जगह बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल में उनको इतना डरा दो कि वो ऑटोमोबाइल की बात ही नहीं करे, पप्पा गाड़ी नहीं चाहिए वो, हाँ, अभी क्या होता है, पप्पा हमको गाड़ी चाहिए, इतना डराओ कि गाड़ी चाहिए ही, पैदल जाएंगे पापा, या फिर वो उस पे जाएंगे, वो बोर्ड कौन सा था, क्या कौन सा बोर्ड बोलते हैं उसको, स्टेट बोर्ड। सो मैं सीढ़ी पे जाऊंगा, रेलिंग पे उछल के चढ़ जाऊंगा, वो सब करूंगा, जहाँ पे कोई नहीं जा सकता वहां घुस, स्टेट बोर्ड में बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होता है, खाली क्या होता है, टांग टूट जाती है, ठीक है। तो इतना सब करने से हमारा अर्थ जो है वो बचा रहेगा और बहुत टाइम तक एंजॉय करते हैं, ठीक है।
शाम छोड़ के बैठ जाएंगे तो फिर गाड़ी की भी जरूरत नहीं होगी, सीधे व्हील चेयर बैटरी होगी। चलो तो इस तरह से ये चैप्टर अभी खत्म होता है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, दिस वाज कंप्लीटली फन स्टोरी। ये लोग बोलते हैं ना मरने से डरना नहीं चाहिए, तो हंसते हंसते मरेंगे इस चैप्टर को पढ़ने पर। Okay, shall we start the next chapter? Reflection of light. So I'll give you 5 minutes to just go through the entire chapter. अगर उसमें कोई चीज भी है जो तुमको नहीं समझी है तो एक बार पूछ लो, then we'll go to reflection of light. Reflection of light. We have 20 minutes, right? Yes. This is a very important chapter. Reflection of light. कुछ है इस चैप्टर में जो तुम्हें लगता है कि मुझे थोड़ा और बताना चाहिए उसमें? चलो गया आगे का बढ़ो और तो हर तरफ से हाथ डाल के कुछ भी कर ले, अभी गायब करने वाला है। बात करना है ऐसा। खत्म कर दिया। ये सारी प्रॉपर्टीज भूतों की हैं। Okay, so anybody has any doubt in this chapter? पक्का? No तो इसने बोला। सर पर आपने बोला कि इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में हाँ। बैक्टीरिया हीट में ज्यादा अच्छे रहते हैं। या हीट में सर्वाइव ज्यादा देर तक करते हैं। वही नहीं होते ना सर्वाइव। कुछ बात होते हैं। कुछ भी पर एक दिन जो डेडली होती है जिससे पॉपुलेशन देखो भाई, गर्मी में मच्छर बढ़ते हैं कि ठंडी में? गर्मी में बढ़ते हैं ना, तो मच्छर से क्या होता है? मलेरिया। मलेरिया से क्या होती है? मौत होती है। ऐसे तो गर्मी में ना वो जो बैक्टीरिया है ज्यादा स्प्रेड होता है, बहुत ब्रीड करता है। तो बैक्टीरिया नहीं मरा तो हमको मरना पड़ेगा, वो हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसलिए बैक्टीरिया को मारने के लिए ग्रीन हाउस नहीं बनाएगा, लंबा स्टेप है। ठीक है, बातचीत बहुत होगी। लेट्स स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और कोई है? और कोई डाउट है? देख लो लास्ट 2 मिनट्स। क्या हिंदी पढ़ाऊं? कल ही बोला था। चलो, so let's start. Shall we? Reflection of light. ठीक है. So let's begin by a question. How do we see things around us? हाँ? पक्का ना? Ice. तो अभी हमारे पास ice है, right? Ice लाइट है क्या? बहुत कम है। अभी पहले ऐसा दिख रहा है क्या? आइस तो है लेकिन दिख नहीं रहा। क्या बदला? लाइट बदला। ठीक है। सो वी नीड एक बंद कैसे होगी? ऊपर का बटन बंद किया तो वो जल जाता है। तो वी नीड लाइट टू सी थिंग्स अराउंड अस। कैसे देखते हैं? To see that bulb, right? It is a luminous body. It is producing its own light. When light comes from that body to our eyes, that is when we are able to see things. I am able to see other objects which are not luminous. So light has to fall on it and then it has to get reflected and reach my eyes. So that light brings the optical information.
which my brain is able to then process and give me a sense of things around. Okay, this is how a basic function of how we see things works, right? So brain is also involved. If we have eye and no brain, then we might think he's not a human, he's a dog. It can happen, right? So brain has to distinguish between the object which it is seeing. And some people who are like mad or gone bad, so उनको क्या होता है चीजें तो वही दिखती हैं लेकिन वो कुछ और समझ लेते हैं, ठीक है? So brain also has to be proper. Now, so now, then what is reflection? I said we see things when light falling on the object gets reflected and received by the observer. So what is reflection? What is reflection of light? Can anybody try? So what reflects a surface? Okay? Anything goes on that. So when a light is falling on a surface, then it is returned in the same medium, right? So reflection, देखो, let's say this is a reflecting surface, any plane surface. So plane surface such as mirror, right? Such as mirror. Rays of light get diverted. Okay. So let us say there is a source of light which is directing light in this direction. So this we call incident direction. Okay, incident rays. So light travels. The path of the light is called ray. Okay. So this is the incident ray direction, right? Then after hitting the mirror, it is now traveling in this direction. So then this we call reflected ray. So what has happened? The light has been returned in the same medium. What was this medium? Air. And again here also it is air only. So whenever light is returned in the same medium by the reflector, this surface is now called reflector. Anything which bounces the light back is called reflector. Okay? So it has to be some surface, either plane or rough. So then this kind of reflection, when all the reflected rays are in the same direction, it is called regular reflection. What is it called? Regular reflection, right? Reflection is return of incident light or returning of incident light back to same medium. Which same medium? From where it arrived. So this is called reflection of light. Returning of incident light back to same medium is called reflection of light. Understood? Yes. So all the reflect. So if the now it depends, like what will be the nature of reflected light? When the surface, when the reflecting surface is plane, that time all the reflected light are in the same direction. That we call regular reflection. So Plane surface matlab irregular, yes. Huh? Plane. Sorry. Oh, not plane, it is plane, sorry. Plane surface, like a smooth mirror. Okay. But now what is irregular reflection? Suppose the surface is now rough. This is the surface. What is it? Like a wall. Irregular. So you will see on a wall, you will see irregular. You can feel it, right? See, this is a relatively plain surface with respect to wall. You'll feel it is rough. So there will be like dips and peaks in between. Now, here if the light is incident on the same side, that is, this is the direction of incidence of light. Now, where will be the reflection? Irregular. इधर उधर, very good. So ये देखो, कैसे देखते हैं हम? How do we decide the reflection, right? उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है? Normal. So this is the point of incidence. Wherever it hits the surface, it is called Normal. point of incidence. Surface line. Line normal. And the line which is perpendicular to the point of incidence is called Normal. normal.
फिर ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ Incidence. और इसको हम क्या बोलते हैं? Angle of reflection. ये दोनों सेम होना चाहिए किसके विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, ठीक है ना। तो इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड एंगल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या बने? प्लेन सरफेस का नॉर्मल तो परपेंडिकुलर है, इसका क्या बनेगा? Angle of reflection. भाई हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाने के लिए नॉर्मल तो चाहिए। तो देखो ये कैसा सरफेस है? ये अभी कर्व है ना, ये कर्व है ना। तो कर्व सरफेस का नॉर्मल क्या होता है? रेडियस। कर्व सरफेस का नॉर्मल क्या होता है? रेडियस। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। अब ये सरफेस अगर समझो ऐसा है तो ऐसा कर्व हो गया, तो ये सर्कल किधर बन गया? इधर बन गया। तो इसका रेडियस क्या है? इधर। लेकिन लाइट तो ये साइड से आ रही है, तो इसको बाहर निकालो। तो नॉर्मल एट द कर्व सरफेस इज द नॉर्मल टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। समझ आया? वो पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओ और उसको नॉर्मल बनाओ। तो यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा? व्हाट इज द टेंजेंट? ऐसा कुछ बनेगा। There is a tangent, so normal here will be this. Okay. To make the angle of incidence and reflection, you need a normal. तो irregular surface में normal कैसे बनेगा? वहां पे tangent बनाओ कर्व पे और ये हो गया angle of incidence। और फिर reflected ray कहाँ पे आएगी? Equal ये बना लिया तो reflected ray। ठीक। अब यहाँ पे क्या बन रहा है तुम्हारा नॉर्मल? ऐसे ये टेंजेंट हुआ, इसका ये हुआ, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका टेंजेंट क्या बना? इसका टेंजेंट ये बना, ठीक है। अब इसका नॉर्मल क्या बना? ये बना। तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसके बराबर बने। सो नाउ यू सी हियर वी, लेट्स से दिस वाज 1 2 3, राइट। नाउ हियर वी हैव 1 dash and 2 dash and 3 dash. Are they in the same direction? No. So when the reflected rays are in different direction, right, then it is called irregular reflection. ठीक है? So this is a rough surface. So rough or irregular surface. Such as wall. ठीक है? So reflected rays are not in same direction. Are not in same direction. So reflected rays are not in same direction. Got it? So what have you learned? What is the normal at the curved surface? Normal at curved surface is In the wall. at curved surface. Yes, sir. ये curved है ना? यहाँ curved है. At curved surface is the normal to the tangent at that point. So normal at curved surface is normal to the tangent at that point. At that point on the curve. Because without normal you cannot draw angle of incidence and angle of reflection. ठीक है? तो ये तो हो गई कहानी what is reflection, what is regular and irregular reflection. Now we have to learn laws of reflection. Right? That's the next part, which is laws of reflection. And that is the last thing we'll do today. What is laws of reflection? Whatever is the nature of surface, regular or irregular, there are these two laws of reflection which are followed. One is angle of incidence is always equal to angle of reflection. It's always equal to angle of
reflection. That is angle R is equal to angle R. ग्लोबल वार्मिंग की ऐसी ऐसी पंखा चाहिए. Normal at curved surface is, अच्छा ये था, angle of incidence is always equal to angle of reflection. Second is, so reflected ray बाद में आया, पहले incident ray. ये इतना तेज कैसे है? क्या मुझे तो खुद देख के लग रहा है हो गया क्या हो गया और कैसे करना है बस this is okay. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. Second में क्या है? The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence ठीक है, lie in the same plane. तो देखो इंसिडेंट रे कहाँ पे है? बोर्ड में. रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे है? बोर्ड में. नॉर्मल कहाँ पे है? बोर्ड में. एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सो दे ऑल आर इन द सेम प्लेन. बोर्ड. ठीक है. सो दिस इज ऑलवेज वैलिड, राइट? सो ये समझ आ गया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. देयर आर two parts in the laws of reflection. One is about two parts, right? मतलब two laws नहीं है, वो एक ही law है जिसमें दो part है. First part is angle of incidence is equal to angle of reflection. Second is the incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incidence like this. ठीक? अब एक चीज और समझा देता हूँ कि मिरर क्या होता है. कौन बताएगा मिरर क्या होता है? मिरर तो सबके घर में है. इसके ऊपर मिरर क्या होता है? ये विंडो वाला ग्लास मिरर है क्या? नहीं. तो मिरर में और उसमें क्या फर्क है? हाँ, लाइट तो कैसे रिफ्लेक्ट करता है? ये मिटा दो. देखो sometimes we know things but we are not able to express it, है ना? तो देखो ये है सुंदर सा शीशा. हाँ, क्योंकि हमने इसको बहुत फ्रेम करा के बढ़िया, मतलब शीशे के सामने जितना देर खड़े रहे अच्छा लगे, है ना? हमें अपनी अच्छी फोटो दिखती है इसके अंदर. विंडो में क्यों नहीं दिखती है? बाहर का पेड़ दिख रहा है, हम क्यों नहीं दिख रहा, है ना? क्योंकि देखो अब मैं इस शीशे को क्या करूंगा, ऐसे कर लूंगा. तो ये ग्लास की थिकनेस है. क्या मैं विंडो वाले ग्लास से मिरर बना सकता हूँ? हाँ, बना सकता हूँ. मैंने वो ले लिया, इसके पीछे मैंने क्या कर दिया, सिल्वर पेंट कर दिया. इसको क्या किया? सिल्वर पेंट किया. तो ये क्या है मेरा फर्स्ट पार्ट? क्या है? ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास. ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है. ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिससे लाइट पास हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है. अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आई डिड सिल्वरिंग, सिल्वर पेंट लगा दिया, सिल्वर पेंट. और आई कैन डिपॉजिट मरकरी ऑल्सो. मरकरी भी सिल्वर जैसे दिखता है ना? मरकरी देखा है किसी ने? हाँ, देखा है ना. कहाँ पे? थर्मोमीटर का बल्ब का जो कलर है वो मरकरी का कलर है, वो भी सिल्वर जैसे दिखता है. ठीक है, उसमें तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम भी देखोगे एकदम चींटी एंड के बराबर. छोटे होते देखो चींटी होती है ना, एंड वैसे दिखोगे, रिफ्लेक्ट होगे. ठीक है, बट दैट्स नॉट अ गुड आइडिया टू कॉम योर हेयर्स. थर्मोमीटर देखिए वो मजा नहीं है.
मिरर शीट, ठीक है। Very good. उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर और एक कोटिंग लगाते हैं, ओपैक। अगर तुम्हारे घर में शीशा है तो फ्रेम खोल के देखना, पीछे एक रेड कलर का या फिर ऑरेंज कलर का कोटिंग होगा। वो वैनिटी मिरर होता है ना, देखना उसको पलटी करके, तो उसमें क्या दिखेगा, इधर कोटिंग होगा, ओपैक कोटिंग। क्या हो रही है, अरे खुल के हंसा, ओपैक कोटिंग। इतना खुल के ना सब क्या बता रहा है, ओपैक कोटिंग। हाँ, ओपैक कोटिंग कई बार क्या होता है, आदमी ओवरबोर्ड चला जाता है। ओके, ओपैक मालूम है ना, तो वो पीछे से सिल्वर नहीं दिखेगा, वो कैसा दिखेगा, कुछ रेड टाइप का या ऑरेंज टाइप का पेंट किया। अगर कभी शीशा नहीं देखा तो आज घर जाके तोड़ के देखिए, तो वो दिखेगा ओपैक कोटिंग। पुराना कोई है जो मम्मी से बोल कन्विंस कर लो नया लाना है, उसको तोड़ दो, ये दिखेगा। तो वो क्यों किया है, वो इसलिए कि ये जो सिल्वर पेंट है ना, वो टिके वहां। वो कभी कभी क्या होता है, कोई कोई मिरर देखा है, उसको बोलते हैं मिरर अंधा हो गया, इसमें इमेज ही नहीं दिख रही, क्यों, बीच में ब्लैक स्पॉट आ गया, देखा क्या, बीच का सिल्वर पेंट गायब हो गया। अभी उधर देख रहे हैं तो वहां से बाहर की पेड़ दिख रही है, हमारा चेहरा नहीं दिख रहा, चेहरे में कुछ घास होती है, देखा कभी भाई। हमने अगर विंडो में मिरर फिक्स कर दिया, ठीक है, और उस मिरर का पीछे का सिल्वर पेंट गायब हो गया, तो उसके पीछे तो पेड़ है ना, ये वाला वो दिखेगा, तो हमारा बाकी जगह चेहरा दिखेगा, आँख की जगह पे पेड़ दिखेगा। है ना, वो इसलिए क्योंकि ये सिल्वर पेंट गायब हो गया। तो ये क्या कर रहा है, अभी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तुम्हारी जो लाइट जा रही है तुमको तुम्हारा चेहरा तब दिखेगा जब वो रिफ्लेक्ट होगी वापस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर वो सिल्वर पेंट गायब हो गया तो यहाँ की लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सीधे निकल जाएगी। तो फिर क्या दिखेगा, यहाँ जो पेड़ है, तो पेड़ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी तुम्हारी आँख की जगह पे क्या दिखेगा, ग्रीन। तो तुम डर सकते हो ये मेरी आँखें ग्रीन क्यों होगी, फिजिक्स समझ में आई क्या? हाँ, तो फिजिक्स पे ध्यान दो, बाकी चीज तो पेरिफेरल है, ठीक है। तो ये मिरर है, मिरर में 3 पार्ट है, ट्रांसपेरेंट जो पॉलिश्ड वाला सरफेस है, फिर जो बैक सरफेस है वो सिल्वर्ड है, और उसके पीछे क्या है, कोटिंग है, उस जो सिल्वर पेंट को बचा के रखे। बाय, ओपैक बैक बैक, ओ बैक बैक, ऐसा फीलिंग आ रहा था ना, समझ गए।